Hello, Sunbeamers. I hope you all are fine. So, after a long time, we are again back with a new chapter of a new class, that is of class 6. And the name of the chapter is based upon the organ system of the body, that is the digestive system. So, in the video link, in the videos, I've already taught you about the organ systems of our body, different organ systems of our body. Very short information was given there about different kinds of organ system. A summarized information was given, but we have not read it in detail. Yeah, obviously in class 4th videos you can see that some part I have taught, but not much, because we have limited that what is required up to class 4th. We have not taught vast course or what is required to class 6th. So today we are going to start digestive system. In the class 4th video, you will see we have read about different parts of digestive system in the process. Here also we will read the same, but in a elaborated manner, in the expanded manner, and in a well understandable manner in form of diagrams and theories and text. So when you are attending the class, to have a note with you and what I am writing, please note it down. So let's start with a positive note. Okay. Yes. First, what is digestion? Digestion means breaking down of complex food into simpler substances. Breaking down of complex food into simpler substances. What is meaning of complex food? Complex food means the food that we eat. The food that we eat is a complex food. Suppose someone is eating rice. The rice is not a simple food. It is a complex food. So first, to make the food used by our body, we have to break it down into simpler substances, into soluble substances, so that it can be easily absorbed by the blood. So the blood can easily absorb it, and then our body can use it so that we can get nutrients and energy from that, so that our day-to-day work will be continued, or it will be utilized in our day-to-day work. So first, if we take rice, suppose we are taking rice, it has to be broken down into simpler substance. Direct rice हमारे बॉडी में मतलब सॉल्युबल सिंपलर डायरेक्ट राइस हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता, उसको फिर एंजाइम्स, उसको फिर डाइजेशन करके उसको एक प्रोसेस में एक बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, उस प्रोसेस से गुजर के उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में बनाना पड़ेगा. दैट हैज टू अंडरगो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस so that it can be used by our body. So that is known as digestion. That process is known as digestion. And the definition of digestion, very, very important. Breaking down, process of breakdown of complex food. Complex food means the normal food that we take into simpler and soluble substances. Soluble, see, the main fluid of our body is blood. So soluble in what? Soluble in blood, absorbed by the blood. Absorbed मतलब जो भी हम फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, कहाँ सॉल्युबल होगा? ब्लड में, बिकॉज ब्लड इज द इंपॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ अ बॉडी. इंपॉर्टेंट क्या, मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो ब्लड ही है. सो ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, एंड ऑल्सो it is a function of blood to absorb the broken down food. Broken down food को absorb करके हमें क्या देगा? एनर्जी देगा. So if food is not converted into simpler substance, we will not get energy. Okay. So process of digestion is not that easy, or it is not that simple. It is very complex. Complex means बहुत ही उसमें enzymes, acids, hormones जो कि elementary canal मतलब secrete करता है. What is meaning of secrete? Means produce. Secrete means produce. Meaning of secrete is produce. Secreted, not security. Many students think secret means security. Not security. Secret means produced. It is produced by the alimentary canal. And what is alimentary canal? We will need the next slide about alimentary canal. But secret means produced. So
many hormones, many enzymes are produced by the alimentary canal, and they help in the process of digestion. So what are that enzymes, what are that hormones, what are that acids which break down complex food into simpler substance? We will read in the next slide. So next slide is about alimentary canal. Next slide is about alimentary canal. Alimentary canal. Okay. Alimentary canal means mouth to rectum. Okay. Mouth to rectum is the alimentary canal. It's a tube-like structure, you see. From mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum. This much is your alimentary canal. A 9-meter long canal. Canal मतलब क्या बोलते हैं? ट्यूब. ट्यूब को कैनाल, ट्यूब या एक छोटा सा पाथ इसमें कुछ फ्लो कर सके उसको हम लोग कैनाल बोलते हैं. सो एलिमेंट्री कैनाल इज अ 9-meter long canal or tube like structure which is mouth to rectum, starts from mouth and ends in rectum, and food travel through the alimentary canal for digestion. Alimentary canal से ही हमारा फूड गुजरता है और कोई भी जगह से फूड नहीं गुजर सकता. Food has to pass through alimentary canal for digestion. और अलग हम कोई सोचेगा ईयर से फूड लिखा नहीं. Food has to go through the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, then the rectum. So this is the path of food from taking to leaving out from the body. That is your excretion or your fission. That we will study further, not now. This is your alimentary canal. You can see the diagram, okay? And the diagram of alimentary canal can come in the examinations. Okay, now next part is your parts of digestive system. What are the parts of digestive system? Parts of digestive system, see, we have read some parts in class 4, but now we will read that in detail. So parts is your mouth. First is your mouth, okay? We are back to the class. So here you can see the diagram of the digestive system so that I can easily explain you the parts of the digestive system, what is written in the points, okay? So let's start. Yes, first is your mouth. So mouth, everyone know mouth. You can sit and see about the mouth. Mouth is here through which we take the food, and after mouth what comes? Tongue. These things you can see easily, you can feel it easily. Tongue. Okay, first is your tongue, then your teeth, then your salivary gland. Salivary gland, see, below your tongue, you will see some fluid is coming out. So that small pores are present there from which fluid comes out, and that is your salivary gland. Okay, there are 3 kinds of salivary gland. One is a parotid, some mandibular, and sublingual. So these things is not required now. You will read it in higher classes. But you remember that there are 3 salivary glands. Salivary glands are 3 in number. Salivary glands are 3 in number. So that much you remember that they are 3 in number. Okay, 3. And esophagus. Esophagus, you see, after the mouth, after you swallow your food, it is mixed in saliva and it goes to the esophagus. Esophagus means the food pipe, this one. Esophagus is the food pipe. This one is an esophagus. Esophagus means it's from the mouth, it takes the food to your stomach. Okay, connection between the mouth and the stomach, you can say. Then stomach it stores food. Everyone knows this is the stomach. J-shaped bag-like structure. Then your liver and gallbladder. Liver and gallbladder, they are not part of alimentary system, alimentary canal. They are your associated glands. They are your associated glands. They are not the part of alimentary canal. Alimentary canal means, I've already told you. Alimentary canals means your mouth, esophagus, stomach, intestine, and rectum. Food doesn't come to liver. Liver secretes some enzymes which helps in food digestion, especially fat digestion. But liver and gallbladder and also your pancreas, this one you see,
your pancreas is here below your stomach. Okay, pancreas, these all comes under associated glands which help in digestion. They secrete something which help in digestion. They directly food doesn't goes through them. स्टोमैक से फूड जाता है, इंटेस्टाइन से फूड जाता है, लेकिन लीवर और पैनक्रियास से कोई फूड नहीं जाता है. ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं. देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, दीस आर योर पार्ट्स ऑफ digestive system, and diagram is very important. The next is enzymes and its characteristics. See, digestion is impossible without enzymes. एंजाइम्स के बिना डाइजेशन पॉसिबल नहीं. एंजाइम्स क्या, एक प्रोटीनेशियस है, यूजुअली प्रोटीन होते हैं, हर एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है. यूजुअली दे आर प्रोटीन व्हिच हेल्प इन डाइजेशन. सपोज हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए. कौन सा एंजाइम? मान लेते हैं हमें एंजाइम चाहिए माल्टेज. एंजाइम का नाम है माल्टेज. तो वो ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा सिंपल सब्सटेंस. सिंपल सब्सटेंस क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? ग्लूकोज. ये अभी एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में. तो वो कन्वर्ट होके बन जाता है ग्लूकोज. सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए. प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम है, प्रोटीएजेस है. फैट डाइजेशन के लिए है हमारा मतलब लाइपेजेस हैं. तो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. केमिकल एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक बायोलॉजिकली होता है, एक मैकेनिकली होता है, एक केमिकली होता है. तीन तरीके से होता है. तो केमिकल एस्पेक्ट जो है डाइजेशन का, वो एंजाइम्स के थ्रू होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन से होता है. तो एंजाइम क्या होता है? बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? एनीथिंग दैट स्पीड्स अप ए प्रोसेस. एक प्रोसेस को, एक रिएक्शन को जो चीज स्पीड अप करता है, जो चीज फास्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट. एंड बायो, व्हाई द यूज वर्ड बायो इज यूज्ड? बिकॉज digestion means it is a biological thing. We are studying it in biology. That's why it is called as biocatalyst. So enzymes are biocatalyst of digestion. It speeds up the process of digestion. Speeds up कर देते हैं digestion को. And without them digestion क्या होता है? स्लो हो जाता है. एक चीज आपको सपोज कार में इंजन है, तो इंजन क्या करता है? उसको स्पीड अप करता है. लेकिन अगर इंजन नहीं होगा कार में तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. एक्सेलरेटर नहीं होगा तो स्लो हो जाएगा धीरे धीरे. सो ऐसे ही डाइजेशन में एंजाइम्स का रोल, एक्सेलरेटर का रोल कौन प्ले करता है? एंजाइम्स प्ले करता है. डाइजेशन में बिना एंजाइम्स के डाइजेशन नहीं हो सकता है. और इम्पॉसिबल, स्लो तो नहीं, रादर इम्पॉसिबल है बिना एंजाइम के. लोगों को जैसे एसिडिटी होता है तो उनमें एंजाइम्स की कमी होती है, इसीलिए उनको एसिडिटी होता है, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए एसिडिटी या गैस जैसी बीमारियां सामने आती है. एंजाइम्स में लिविंग नहीं होती है, वो लिविंग सेल से बनती है बट वो लिविंग नहीं होती है. दे आर नॉन लिविंग बट मेड बाय लिविंग सेल. लिविंग सेल ही बनाती है उसको, स्टोमक बनाता है एंजाइम, इंटेस्टाइन भी एंजाइम बनाता है. तो दैट्स ऑल. एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन्स. ओके, यूजुअली एंजाइम होती है, प्रोटीन्स होती है, और उनको हीट करके, मींस बाय हीटिंग दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. इसीलिए आप सब फील भी किए होंगे या बोला जाता है कि जब फीवर होता है, व्हेन वी सफर फ्रॉम फीवर, वी गेट सफर्ड आल्सो बाय एसिडिटी. एसिडिटी होती है, गैस होता है. Why? Because enzymes get destroyed. Because when our body temperature get increased, enzymes get destroyed. So we also face problems of acidity. We also face problems of gas and other digestion related problems. And best temperature for enzymes is 35 to 40. Rather, I would say 35 to 37. Okay, rather it is 35 to 37. Okay, 35 to 37 is the best temperature for enzyme. It is in degree Celsius. Okay, degree Celsius. And enzyme specific means एक enzyme है वो carbohydrate पैक करता है तो प्रोटीन पैक नहीं कर सकता. Enzyme is specific. What is the meaning of specific? Suppose इस enzyme carbohydrate पैक करता है, तो अगर हम सेम एंजाइम, वही एंजाइम है, ये सेम एंजाइम को हम प्रोटीन में ऐड करेंगे तो वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक डाउन कर सकता है. प्रोटीन पे हम ऐड करेंगे तो प्रोटीन को कुछ नहीं कर पाएगा. या प्रोटीन पे एक एंजाइम ऐड करता है तो उससे हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट में मतलब कार्बोहाइड्रेट में ऐड करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा. तो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम रीयूजेबल होते हैं. एंजाइम को हम फिर से यूज कर सकते हैं, बॉडी हमारा एंजाइम को स्टोर करता है, उसे यूज भी कर सकता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम्स.
Any doubt, you can inbox me in the comments. Okay. Next is your digestive system. It's just normal. The diagram of a digestive system, that is your mouth, salivary gland, esophagus, stomach, gallbladder, everything I have told. Just check it out. Any doubt, you can comment me. This is all about the process of digestion. So when we will move forward over the process, these things, these are the location and function of your parts of digestive system. So easily you can see about the location and function of different parts of digestive system. And if you face any doubt, because now I am not teaching about the location and function in details, we'll lead in the next class. Any doubt, you can ask me. Let us start mouth. The first part of our digestive system. Don't look into this. This is just for an introduction. We will read everything in detail. Okay. First is a mouth. Mouth means we take our food through the mouth. Mouth से ही हम खाना खाते हैं. Mouth से ही खाना खाया जाता है और clean से हम खाना नहीं खा सकते. Mouth से ही खाना खाते हैं. Digestion begins from the mouth. Digestion सब लोग सोचते हैं digestion stomach से start होता है. नहीं. Digestion जो है mouth से start होता है. Mouth में जो saliva होता है. Saliva contains a enzyme known as ptyalin, और ptyalin से starch digestion होता है. The digestion of starch. Suppose you are taking potato digestion starts in the mouth itself. So that is a little bit detailed. It is not required now. Teeth. Mouth has teeth. Teeth means helps to break food into smaller pieces. It is the teeth, you see. Teeth helps to break food in smaller pieces. Salivary glands. There are 3 salivary glands, and they secrete a fluid called saliva. Thunk, जिसको हम बोलते हैं saliva. And saliva also has enzymes which helps in carbohydrate digestion. Okay, which helps in carbohydrate digestion. Okay, carbohydrate digestion and moisten food. Moisten food to eat swallowing. अगर swallow हम लोग बिना सलाइवे करेंगे तो हमारा esophagus में, esophagus एक ट्यूब है, अगर हम अच्छे से chew नहीं करके टंग जो वो teeth जो है वो break down करता है. Food is broken into smaller pieces and saliva helps in mixing it so that easily food passes to the esophagus. This is the esophagus here. Easily food passes to the esophagus to the stomach. Okay, so saliva mixes and moistens the food. Moisten मतलब गीला कर देता है food को, and teeth helps in breaking it into smaller pieces. Okay, breaking it into smaller pieces. So tongue helps in rolling and pushing the food. Rolling and pushing करता है pharynx में. Pharynx के बारे में अभी पढ़ना जरूरी नहीं है. Rolling and pushing मतलब रोल करता है, इधर उधर घुमाता है फूड को, और टेस्ट में भी हेल्प होता है tongue. Tongue helps in testing the food. How food is tasting? Is it good? Is it bad? Is it salty? Is it sour? ऐसे टेस्ट के लिए tongue का काम होता है. Okay. Then next slide is maybe about your food pipe or your esophagus. Esophagus is the food pipe. Food pipe is connecting your mouth to your stomach. Mouth से stomach कौन connect करता है? Esophagus connect करता है. Esophagus connects the mouth to stomach and it carries the food. Mouth has teeth. Teeth helps in breaking the food into smaller pieces. And saliva helps in mixing the food. Mixing the food means उसे अच्छे से गीला करके, अच्छे से मिक्स करके, उसे moisten करके esophagus के थ्रू से पास करना. Esophagus के थ्रू से फूड पास होता है, फिर स्टोमक के अंदर जाता है. When further digestion process takes place. Esophagus doesn't secrete any enzyme, just it helps in transferring the food from mouth to stomach. Transferring the food, मतलब food को ले जाना, mouth to stomach food को ले जाना. Okay, next would be your stomach, but I think we should read stomach in the next class. Okay, till then, thank you. Please subscribe to the channel, like to the video, share it to your friends. Goodbye. Jai Hind. And wishing you happy Navratri. Stay home, stay safe.